Guys, so before beginning with our today's lecture, I have two announcement surprises for you. तो पहला सरप्राइज़ ये है कि हमारे जो भी लकी सब्सक्राइबर्स होंगे हम उनको फ्री अमेज़ॉन वाउचर गिफ्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा सरप्राइज़ है वो ये है कि आप पूरा लेक्चर देखिए, लर्न कीजिए, समझिए एंड लेक्चर के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड टू द टुडे टॉपिक एंड यू हैव टू आंसर इट। एंड जो भी आंसर करेगा he or she will be getting 100 Paytm cash prize. So don't waste, just learn and answer. Class 12th Biology Reproduction Part 4 Pre-fertilization Events. We have already discussed about the definition of fertilization and about reproduction. So I already told you in my previous video about what is fertilization and the three steps of the fertilization, that is pre-fertilization event, fertilization and post-fertilization. So in pre-fertilization, it includes all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. So name itself suggests pre-fertilization, मतलब पहले fertilization के पहले वाले events. The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. In some algae, we can say, for example, in some algae, two gametes are so similar in appearance that it is not possible to mark them into male and female gamete. So these gametes are called as homogametes. Okay, homo means same, or we can say isogametes. Iso also same. So first event जो है प्री फर्टिलाइजेशन, उसमें भी दो इवेंट्स होते हैं, सब इवेंट्स। पहला है गैमेटोजेनेसिस एंड नेक्स्ट गैमेट ट्रांसफर। पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस सिंपल भाषा में बोला जाए तो गैमेट्स का प्रोडक्शन। सो गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। नेक्स्ट इज हेटेरोगैमेट्स। Similarly, like homogametes, it stands for same gametes. Heterogametes stands for different gametes. Majority of sexually reproducing animals, the gamete produced are of two morphologically distinct type, that is heterogametes. Such organisms, the male gamete is called the antherozoid or sperm, and while we can say the female gamete is called the egg or ovum. ठीक है, अगर जब हम बात कर रहे थे होमोगैमेट्स की तो वो दोनों क्या थे, सेम थे। दोनों का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो था वो नियरली सेम था कि हम नहीं बोल सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। लेकिन मेजॉरिटी में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो ऑब्वियसली हम बता सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो हम मेल को बोलते हैं एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म, और फीमेल को हम बोलते हैं एग या फिर ओवम। Now, as in the sexuality in organism, that is sexual reproduction in organism generally involves the fusion of male and female gametes from different individuals. Okay, but it could be from the same individuals also. You will come to know if you will be collecting some different types of flowers of the different plants, and you will be noticing one thing, that is plant may have both male and female reproductive structures in the same plant also, and that those plants are called bisexual plants, or we can use the term monoecious. Okay, while some plants do have that male and female reproductive structures on different plant, so these are यूनिसेक्सुअल्स और वी कैन से डाइशियस। यूनि मतलब हम देख सकते हैं एक एक अलग अलग, वन तो जो सेपरेटेड है, और डाइशियस। सो ये टर्म्स हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए कौन सी कंडीशन वाला प्लांट है। अगर हम देखते हैं यूनिसेक्सुअलिटी में, तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, ऑब्वियसली स्टैमिनेट होगा और वो बियर करेगा स्टेमन, दैट इज उसकी एक ही पर्टिकुलर प्लांट प्रोडक्शन है, वो है स्टेमिनेट। अगर फीमेल है तो वो होगा पिस्टिलेट, हम बोलेंगे ये फीमेल प्लांट और ये पिस्टल्स बनाता है। पिस्टिलेट है तो पिस्टल्स बनाएगा। ओके, मोनोइशियस प्लांट्स जैसे कि कोकोरबिटा, एंड डाइशियस जैसे हम देख सकते हैं हर्माफ्रोडाइट या कॉकरोचेस। ओके, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन।
गैमेट का फॉर्मेशन के लिए पहले हमें क्या चाहिए पड़ेगा, सेल्स में डिवीजन. गैमेट्स इन all heterogametic species are of two types. We have seen male and female. Gametes are haploid, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं वो. दो द मेल पेरेंटल बॉडी और फीमेल पेरेंटल बॉडी, द पेरेंटल बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी इधर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. हैप्लॉइड कंडीशन मेनली हम देखते हैं अपने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. तो जो पेरेंटल हैप्लॉइड पेरेंट है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को बाय माइटोटिक डिवीजन. ओके, ये इसके प्रोडक्शन के बाद जो फ्यूजन होता है उससे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देख सकते हैं. Now we can say for example in many algae bryophytes they will be having haploid plant body. क्या है ये, unicellular but belonging to pteridophytes. फिर हम देख सकते हैं animals including humans, the parental body is diploid. So it is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. ठीक है, diploid body को क्या बनाना है, 2n has to produce n, then only that one n from one parent and another n from another parent will be combining and producing 2n generation. Again that will be n plus n 2n generation of an organism of the new offspring. ठीक है, so diploid gamete of the parent undergoes meiosis division or a reduction division to produce an generation. Okay, so in this diploid organism specialized cells are called myocytes, a gametic mother cell that undergoes meiosis, and only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. Okay, सेकेंड इवेंट जो आता है वो होता है गैमेट ट्रांसफर. पहले तो गैमेट का प्रोडक्शन, उसको हमने बोला गैमेटोजेनेसिस. अब गैमेट का ट्रांसफर करना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा. सो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन. फ्यूजन हम बोल सकते हैं एज अ फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन, मेल एंड फीमेल, male gamete is motile and female gamete is stationary. Majority of organisms will be having the same condition. Male gamete will be motile, it could swim, or we can say it could move from one place to another, that is the term for motile. And female organism mostly it will be stationary. Exceptions we can see for few fungi and algae, so that both may be motile. Another very important thing is there is a need for a medium through which the male gamete moves. In several plants with like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which gamete transfer takes place. Very especially in the case of bryophytes, तो वो जो है वो पूरी लाइफ स्पैन उनकी वाटर में स्पेंड करते हैं. तो the main thing which make the male gamete to reach the female gamete is water only. So it could make the male gamete so capable of swimming, or motility increases of the male gamete. And this is the reason a large number of the male gametes is produced, as they may fail to reach the female gametes many number of times. So to compensate this loss of male gamete during the transport, the number of male gamete produced is several thousand times the number of female gametes produced. So this is the important thing to be noted कि मेल गैमेट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में क्यों बनते हैं फीमेल गैमेट से. इसलिए बनते हैं क्योंकि जब वो स्विम करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बताया वाटर में, तो चांसेस रहते हैं कि काफ़ी सारे जो मेल गैमेट्स हैं उनका लॉस हो जाएगा फीमेल गैमेट तक पहुंचने में. इसलिए वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है कि वो पहुंच जाए फीमेल तक. इन सीड प्लांट्स pollen grains are the carriers of male gametes and ovule has the egg. ठीक है, सीड जो सीडलिंग्स होती है, जिस प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं, उसमें जो मेल है वो क्या है, अपना मेल कैरियर pollen grains, और जो फीमेल है वो ovule has the egg. Pollen grains produced in anther therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. तो pollen grains को कहाँ पहुँचाना है हमें,
ओव्यूल या एग तक, ठीक है. सो इन बायसेक्सुअल term I have already told you, bisexual that is monoecious condition, एक ही प्लांट में रहते हैं दोनों, ठीक है, मेल और फीमेल. सो सेल्फ fertilizing plants transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close, they are placed close obviously. तो उसमें बहुत आसान रहता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना, जिसके कारण pollen grains जो है soon after they shed come in contact with the stigma. Okay, but in cross pollinating plants including dioecious plants, a specialized event called pollination occurs. Now what is pollination? Pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma. So pollen grains को हमें कहाँ तक पहुँचाना है? स्टिग्मा तक. और वो स्टेप क्या होती है? पॉलिनेशन, जब पॉलन और स्टिग्मा फिजिकली फ्यूज होते हैं. फिर तो जो लास्ट स्टेप होती है, pollen grains germinates on the stigma itself and the pollen tube carrying the male gametes reach the ovule and discharge male gametes near the egg. So जैसे ही पहले हमने देखा pollen ने स्टिग्मा को टच किया, वैसे ही pollen कहाँ जाएगा? अब कौन सी ट्यूब से जाएगा नीचे? pollen tube जर्मिनेट होने के बाद बन जाएगी, जो कि सीधे रुकेगी कहाँ? ओव्यूल पे जाके. तो वहां पे वो एग से फ्यूज करेगा. इन डाइशियस एनिमल्स सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हमने बात कर ली यहाँ पे क्रॉस में बायसेक्सुअल की, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे डाइशियस कंडीशन है, यूनिसेक्सुअल जहाँ प्लांट्स अलग अलग हैं, वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. द ऑर्गेनिज्म मस्ट evolve a special mechanism for gamete transfer. Successful transfer and coming together of gamete is essential for the most critical event in sexual reproduction, the fertilization. And fertilization जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम डाइशियस कंडीशन में या बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन में जो दोनों प्लांट्स अलग अलग है, वहाँ पर गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा. So it will be a critical event. So let's study it in my next video. Time for the questioning round, and the question is, why male gametes is produced more in number than the female gametes? Go and watch the video and answer me. Hey guys, please like, share and subscribe my video, and you can follow us on Instagram and Facebook. And please get the link of our Telegram and WhatsApp group from description box. And see you soon in my next video. Thank you. Please like, share and subscribe EduPhy India. Thank you.